organizing this webinar in continuation of our work on SHGs in Chhattisgarh. The topic for today's webinar is Women SHGs Leveraging Digital Technologies. I once again welcome our fellow panelists, esteemed panelists to this webinar. So just to give a quick context, Outlook has been trying to push the discourse on various social and environmental issues at various stages. And in the current series, we have been working with this Chhattisgarh government to bring the spotlight on SHGs. SHGs, as of course, I mean, it's a very learned panel we have. I don't need to really tell you much about it, except that I'll just briefly put some figures on the table. One is that there are around 1.2 crore SHGs in the country, and they have savings of around 37,000 crore. Their outstanding credit is 1 lakh crore, which seems to be quite formidable. But when we break it down into smaller numbers, it doesn't seem to be that big as we have seen corporate sector getting the credits and outstandings written off, of course. 1 lakh crore, when you're talking about outstanding credit, this comes to around 1.80 lakh SHG per SHG in the country. And on average, an SHG would have 10 to 20 members. So let's take 12, a base number. So it means 15,000 outstanding per member. And last year, government in its push to promote SHGs under Atmanirbhar Bharat gave around 16,000 crore sanction for SHGs all over the country. Coming back to Chhattisgarh, which is our focus area right now, the government last year waived around 12 crore of loans worth of SHGs last year. The budgeting sanction has been increased from 2 crore to 10 crore to SHGs last year. And this year, there were two very interesting schemes, which I'm sure they must have come to your notice also, were launched. One is Godan Nyaya Yojana, which is about using cow dung for vermicompost as well as fertilizers. The idea is to bring in a bit of income generation to these SHGs and get them into the value chain here. And of course, the next stage has been this year, they also tried to make biogas from this cow dung, which they're supposed to be collecting. So this is a large scheme, and of course, it's thought out, very well thought out. The government has seen it end to end kind of a thing. So this year, they also awarded around 10-15 of these change maker women recently at a summit, which was inaugurated by the Honorable Chief Minister Baghel sir, and of course there were other audiences also. As a follow-up to that, we have started this series of webinars to look at how this movement can be further taken forward. They're completing 30 years of existence early next year, actually, and this seems to be the next stage of where they can grow and probably do better for themselves and for the society in general. But there are some basic generic challenges they are facing. उन challenges में income generation है, business management skills की कमी है, financial management of course दिक्कत है ही है, knowledge sharing नहीं हो पा रहा आपस में, और marketing का सबसे बड़ा एक link नहीं है. तो इस सब में हम देख रहे हैं कि काफी चीजें हो सकती है, काफी चीजें हो रही है. But abhi jo mota what we can touch about is that we've seen that change makers like you, jo front runners hai aap sab log, you have been using various digital devices, mobile applications, videos, social media, WhatsApp groups also, other means you have been using to help various communities across the country, and some of you have been working very close with SHGs also. So we're trying to figure out what is happening and what more can be done to take this movement to the next stage. At this stage, I'll begin with Mr. Palasana Krishnan, who is India Country Director of Digital Green. Palasana sir has been working in sustainable development for long, and of course, livelihoods is where we're coming to right now. And livelihood for him is not livelihoods only; he's also looking at a very holistic manner. He's also looking at DRR, which is a disaster risk reduction, climate change related areas also. And from that itself, we take it to ICTs for D, which he has been working on, which is one of the USPs of all the panelists here. And Digital Green has been one of the earlier players here in this space, actually. Then we also have Shubhranshu Chaudhary ji, who is co-founder of CG Net Swara.
CGNet Swara is at a very basic level. If we talk about, I'm sure Shubhranshu will have more to say about it. Is a voice-based portal which connects with a mobile news service to generate news. But more than that, is about access to news, promoting access to news, promoting access to information. And he has been also able to get these local reporters to develop news about their own issues and concerns and get redressed also. It's a very robust system, end-to-end kind of a thing, which he has been working on. And Shubhranshu brings in a lots of expertise from his BBC days. He spent years there, and of course, Guardian days also. And more importantly, has worked with BBC Media Trust, which works with change makers itself. So he's like a trainer of trainers here. And I'll come to Ms. Gayatri Shanamugam. Gayatri is a trained professional in education and technology in IT and training. And here she is right now looking at, she is Vice President Access to Government Schemes, which is very important because what we see is government has lots of schemes and policies on paper, but unfortunately they don't reach people because there's an information lack and there's capacity building. There's also problem in accessing those schemes actually. So it's not a completely, it has to be a two-way kind of a thing, but it's unfortunately more one-way top-down kind of a thing. So we'll come to that in more detail later on. And then we have also Rupa Srivastava with us. I'm really pleased to have her on board because she works at the grassroots level really. And she's president of of Grehini Voluntary Organization, which is working at the grassroots and set up something like a digital village. And she herself has been working on women's issues, एम्पावरमेंट पे, लाइवलीहुड पे काफी काम किए हैं आप. तो आपका बहुत ग्रासरूट्स का छत्तीसगढ़ का जो एक्सपीरियंस है, दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर दिस काइंड ऑफ ए थिंग. So thank you very much for joining. I again welcome all of you. So I'll begin with Palsana Krishnan ji. Sir, can you briefly tell us about some of the relevant work which you have been doing in this area using technology for empowerment of women and particularly SHGs के साथ आपने काम किया. आपने काफी NRL के आप लोग शुरू से ही एक मेन की प्लेयर रहे हैं. तो इस एरिया में थोड़ा सा आप अपने काम के बारे में बताएंगे तो थोड़ा सा हमें भी हेल्प होगी. Cool. Thank you so much, Rajiv, and hello to all the other panelists too. As you rightly mentioned, Digital Green has been predominantly working in agriculture and livelihood sector in India, as well as in some other countries in Africa and South Asia, focusing on how do we leverage the power of technology to enhance the productivity and income of smallholder farmers. So that is what we have been trying to do over the years. And to achieve that, we have come out with this a number of technology-led initiatives, which we have been working in close partnership with many state governments, including Bihar, Jharkhand, Odisha, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Uttarakhand, etc., etc. And I would like to specifically focus on the work that we did in Chhattisgarh over past 5 years or so, right? And quite interestingly, in Chhattisgarh, as like in Uttarakhand, our focus was more into health and nutrition. Quite interesting, using the same approach, simply with this belief that it is a prerequisite for the women at the grassroots and also smallholder farmers to have a better health and better nutrition so that they can improve their overall productivity and livelihood opportunities. So that was the premises why we intervened on health and nutrition in Chhattisgarh as well as in Uttarakhand. In Chhattisgarh, we partnered with the National Health Mission as well as collaborating with the state Rural Livelihood Mission and carried out intensive intervention in 13 blocks of Rajnandgaon and Kabirdham districts, focusing and including some of those very vulnerable tribal community blocks in roughly about 1,600 villages across these two districts. And what we did was that we collaborated with these government institutions and came out with 3 or 4 distinct application of technologies to impart knowledge on improved health and nutrition behaviors, thereby helping the grassroots community to have a much better behavior or health and nutrition seeking behavior. Okay, and what are those technologies that we applied on ground? The most rudiment technology, to say so,
was actually use of a simple digital camera to record useful, improved health and nutrition practices from the villages themselves, and then show it back to the community so that the people, through a peer-to-peer interaction, peer-to-peer education, are able to see how some of their own folks on ground are actually improving their health and nutrition compared to others. So this is based on adult learning principles and peer-to-peer education, where the videos that we shoot, it's about 8 to 10 minutes video on, let's say, for example, the improved health through the maternity period of a woman, how to take care of children's health and nutrition, how to improve family planning and reproductive health among young couples. So we shoot it locally, and it is burnt into a small chip, and it is shown back to the community by the frontline workers, including ANMs, the Anganwadi workers, etc. And to do that, they also use Pico projector. So that was another technology that we used, very rudiment on the grassroots, right? It was required because the people were, the community whom we tried to reach out was absolutely disconnected from the modern technologies like smartphones and etc. That is one. Then the second level that we went about was, there were even communities who are not reachable even through this approach. They're outside the network of even the extension system. And we introduced IVR, interactive voice response system over there, where actually people, even having a feature phone with them, can give a missed call and they can listen to recorded messages on the same health and nutrition behaviors on the community. That was second. Somewhere in 2018, 2019, because the smartphone usage, the smartphone penetration in India started increasing, including in Chhattisgarh, of course, not like other parts of the country, but we saw that it was rapidly increasing from about 3 to 4% at the village level to almost 25-35% over that period. There was a significant increase. And to take advantage of that, we started using WhatsApp as the medium to reach out to people. Here, we broke down those videos into small, 1 minute or 1.5 minute clippings, and started forming WhatsApp groups administered by the extension agents in the villages. And we started sending out these advisories where the local WhatsApp group can interact with each other, share their concern, ask questions, and also get lessons. So these were the levels of technologies that we applied to improve health and nutrition behavior. Thank you very much, sir, for sharing in detail, and the kind of impact you have been making. Reaching out to 1 lakh people is quite a big number. So I'll come back to you. I have some queries, very interesting things you said. Thanks a lot. May move to Shubhranshu Chaudhary ji. Shubhranshu ji, थोड़ा सा अपने काम के बारे में हमारे सहयोगियों को और दर्शकों को बताएंगे प्लीज. तो थैंक यू राजीव जी. तो हम छत्तीसगढ़ के गांव में जो रेड एरियाज जिसको कहते हैं, आप लोगों को मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे इलाके में पॉलिटिकल वायलेंस चल रहा है. तो वहाँ पे कम्युनिकेशन फैसिलिटीज बहुत कम है, क्योंकि जो अभी कृष्णन जी बात कर रहे थे, तो वो नॉन कॉन्फ्लिक्ट एरिया में भी मोबाइल फोन और इंटरनेट की रीच बहुत कम है. तो जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे जहाँ हम काम करते हैं, उस इलाके को बस्तर कहते हैं. बस्तर एक बहुत बड़ा संभाग है. ये एरिया उसका केरल प्रदेश से भी बड़ा है. वहाँ पर लगभग 37% इलाके जो हैं वो अभी वहाँ पे युद्ध चल रहा है, वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. तो लोगों के पास में फोन अभी बढ़ रहा है. जो अभी कृष्णन जी ने भी बताया कि स्मार्टफोन भी अभी हमको दिखते हैं कि गांव में कुछ लोगों के पास में हैं, पर बहुत सारे गांव में मोबाइल फोन का सिग्नल नहीं होता है, यद्यपि वो अभी भी बढ़ रहा है. तो वहाँ जो SHGs हैं, जो महिलाएं हैं, वो 2 तरह का काम बोलते करती हैं कि एक वो फार्मर है और दूसरा वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठा करती हैं. तो हम लोगों ने अभी जो उनके साथ में काम करना शुरू किया है, पहले जो हम करते थे कि हमने एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म वहाँ बनाने की कोशिश की. तो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म जो आमतौर पे जिसको हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो हम
टॉप डाउन होते हैं कि शहर से खबर चल के गांव तक जाती है, पर ये एक राजतंत्रिक मॉडल है, एरिस्टोक्रेटिक मॉडल है कि राजा और प्रजा, पर जैसा आजादी के बाद हुआ कि अब प्रजा मिलके राजा को तय करते हैं, तो वो मॉडल क्या कम्युनिकेशन के लिए एक बेहतर मॉडल होगा या डेवलपमेंट के लिए बेहतर मॉडल होगा, तो उस मॉडल पर हम लोग काम करते हैं कि गांव के लोग जो दूर दूर के इलाके में रहते हैं, जिनके पास फोन है, जिनको शायद लिखना भी नहीं आता है, वो हो सकता है मेन स्ट्रीम लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, तो वही आईवीआर सिस्टम जिसकी बात कृष्णन जी कह रहे थे, तो हम उस पर काम हमने 10-15 साल पहले करना शुरू किया कि गांव के लोग अपनी कहानियां बोलते हैं, गीत गाते हैं, तो एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म हम लोगों ने तैयार किया और विभिन्न बोलियों में, और खासतौर पे जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं आजकल तो वो स्कूल में गए हैं, बुजुर्ग महिलाओं में हमने देखा कि वो स्कूल नहीं गई हैं ज्यादा, तो वो उनकी जो बोलियां हैं उस पे ही बात करती हैं। तो जब आप बोलियों में प्लेटफॉर्म बनाते हैं तभी वो कंफर्टेबल महसूस करती हैं। उनको हिंदी भी ठीक से नहीं आती है, तो जैसे गोंडी यहाँ की एक भाषा है, गोंड आदिवासी यहाँ के मुख्य आदिवासी समूह है, गोंडी में भी बहुत सारी बोलियां हैं, वो थोड़ी थोड़ी अलग होती हैं। तो जब आप एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो उनकी बोली में है, तो महिलाएं फिर खुल के सामने आती हैं, और ये मूलतः एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के साथ एक ग्रीवेंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म की तरह डेवलप हुआ। बट फिर हमने देखा कि जो कृष्णन जी कह रहे थे कि अब धीरे धीरे लोगों के पास स्मार्टफोन बढ़ रहे हैं, इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, व्हाट्सएप बढ़ रहा है, तो उसी फोन नंबर पर अभी लोग वीडियो भी भेज सकते हैं। तो जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स है आजकल बहुत गांव में, लेकिन उसमें भी बहुत सारा फेक न्यूज, बहुत सारी गड़बड़ खबरें घूमती रहती हैं, जो खास तौर पे हम लोगों ने अभी जो वैक्सीनेशन हुआ, वैक्सीनेशन के खिलाफ में बहुत लोकल वीडियोस, लोकल डायलेक्ट्स में घूम रहे थे, तो उसको हमने करना शुरू किया। और तीसरा अभी जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक शुरुआत है कि ये जो किसान हैं और ये जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो इकट्ठा करते हैं, उसका इनको अक्सर बेहतर दाम नहीं मिल पाता है। जैसे छत्तीसगढ़ में सरकार चावल खरीदती है, धान खरीदती है 25 रुपए में, और इन रेड एरियाज में जब हम जाते हैं, लोगों से पूछते हैं कि आप कितने में धान बेच रहे हैं, तो वो कहते हैं 10 रुपए में हम बेचते हैं व्यापारी को और 15 रुपए में बेचते हैं माओइस्ट को। तो क्यों 10 रुपए में बेचते हैं, सरकार तो 25 रुपए में खरीदती है। तो नहीं, हमारे पास तो जमीन का पट्टा नहीं है, हम रजिस्टर्ड नहीं है, वगैरह वगैरह, और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। तो हम टेक्नोलॉजी का यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या, जैसे हम जो रेडियो चलाते हैं उसको गांव के लोग बुलटू रेडियो बोलते हैं। बुलटू जो है वो ब्लूटूथ का अपभ्रंश है, क्योंकि इन इलाकों में, बहुत सारे इलाकों में फोन नहीं चलता है, फोन का सिग्नल नहीं चलता है, तो द ओनली थिंग विच वर्क्स, जो काम करता है फोन पर, वो है ब्लूटूथ। तो वो ब्लूटूथ से ही वो रेडियो को एक दूसरे से ट्रांसफर करते हैं। तो इसमें व्हाट्सएप भी इन्वॉल्व होता है और ब्लूटूथ भी इन्वॉल्व होता है, और बीच में इंटरनेट है। तो इंटरनेट, फोन, ब्लूटूथ, ये तीन टेक्नोलॉजी इसमें जुड़ के एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म को क्या अब हम गुड्स के एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म भी बदल सके, जिससे कि ये जो 10 रुपए में बेचते हैं, ये लोग जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसकी प्योरिटी बहुत है। ये फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये अनडेवलप्ड एरियाज हैं। तो अनडेवलप्ड है मतलब कि डेवलपमेंट की खराबियां भी वहां नहीं पहुंची हैं। तो पेस्टिसाइड नहीं पहुंचा है, फर्टिलाइजर नहीं पहुंचा है, आप इसको नेगेटिवली देख सकते हैं। पर इसको अगर आप फ्लिप करें तो आप इस तरह से बात कर सकते हैं कि वो जो है, जो चावल उगा रहे हैं वो बहुत शुद्ध है, वहां पे कोई रेसिड्यू नहीं होगा, कोई फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड कभी नहीं यूज हुआ, पर उसको बेहतर दाम अगर मिल सके, तो क्या हम टेक्नोलॉजी का यूज करके जो 10 रुपए में बेचते हैं उसको बेहतर दाम जहां मिले, वहां तक का एक लॉजिस्टिक्स टेक्नोलॉजी की मदद से
उनको दे सके। इस पर अभी हम लोग SHGs के साथ में काम कर रहे हैं। जो अभी कृष्णन जी ने AI की बात की, तो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की आजकल खूब चर्चा हो रही है, जिससे कि वो साबित किया जा सकता है कि कौन सा सामान कौन से जगह में पैदा हुआ, कहाँ उसकी प्रोसेसिंग हुई, तो उसको भी क्या हम लोग इसके बैकग्राउंड में डाल सकते हैं। इस तरह की कोशिशें हम लोग कर रहे हैं। ये सब फ्यूचर की बात है, पर अभी जो हम लोग करते हैं SHGs के साथ में, वो कि ये इनका जो प्रोडक्शन है उसका जो दाम उनको मिलता है, वो थोड़ा सा उनकी आमदनी अगर हम बढ़ा सकें। So Shubhranshu ji, thank you very much. It's very interesting to know how कैसे आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को ग्रासरूट्स के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम वापस आएंगे इस पे कि इसको आगे कैसे लिया जा सकता है। Thank you very much for sharing this kind of information with us. Now I come to our next panelist, Gayatri Shanmugan ji. Gayatri, could you briefly tell us? I think Haq Darshak also has a mobile application which is also quite popular in terms of, probably I'm sure there's more to Haq Darshak than one mobile application in terms of numbers and impact. Probably you could share some of the stuff with us. Thank you very much. Yes. So I'll talk briefly about Haq Darshak model, and then in particular about the work that we have done in Chhattisgarh in the past. So Haq Darshak is, in a very simple manner, is an organization that takes social security schemes that the government has budgeted for, and like how you explained, there is not enough awareness of what are the schemes that the citizens are eligible for, what are the schemes that I'm eligible for. Awareness is not there. Even if awareness is there, what is the procedure to apply for it? Where do I go? How many forms to fill up? Which office should I go and submit that form? Can I read that form and fill it up? Do I have that literacy level, right? So there are various problems in accessing that benefit. It is that gap that Haq Darshak has been trying to address in the last 6 years. We are a 6-year-old organization. So we do that through 2 ways. One is through technology. We have developed an app wherein we have mapped about 7,000 odd government schemes, central government, state government schemes, where we work in about 24 states in the country today. So all these schemes are digitized in our app. That is what is the backend engine that is running, right? On the front end, we can go, even citizens like you and me can go download that app. We can put in, answer some very basic questions about our profile, right? Age, gender, caste, which area we're coming from, our geographical location and all of that. And the app will tell us what are the schemes that each of that individual is eligible for, right? So that's the technology that is available for all of us to download and use, right? So that is what we have built. But with this building this app doesn't mean that, people are going to get access to that benefit, right? Therefore, that last mile connectivity, which is where our work with SHGs, we call them Haq Darshikas, right? Women entrepreneurs that we have trained across the country from the community. We capacity build them on this application. We teach them how to use that smartphone. We teach them how to, use the app, how to screen, what we call a screening for that citizen, and then find out what are the schemes that particular citizen is eligible for in their own community, in their own village. And then we have also trained them on how to apply for that scheme, right? What are the forms to be filled up, which government office they should go submit in, how to liaison, how to follow up. All that capacity building exercises is done by us. And, till the time the citizen gets that benefit, our job is there and our support system is there till every citizen gets that benefit of that scheme. That is Haq Darshak's business model. So as you can see, the impact that we are trying to create is twofold, right? One is the citizens themselves getting that benefit, which the government has already budgeted for anyway, right? So that way we have reached about 1.6 million citizens in the country in the last 6 years. So that is one kind of impact that we are trying to create. The other kind of impact is creating this community of women entrepreneurs who make this happen on the ground, right? So we across the country have trained about 20,000 women Haq Darshikas who know how to use our app, who know how to go reach out to citizen and make this scheme happen, right?
and about 2,000 crores worth of benefit that we have unlocked in the last 6 years. Particularly in Chhattisgarh, we have tied up with SRLM, and therefore, the SHGs that are associated with the SRLM, where we have trained about 2,000 women, no, not 2,000, sorry, 5,000 women entrepreneurs on this app of ours, and all that other soft skills that we have to train them on, for them to go and unlock benefits for at least about 10,000, 20,000 citizens within a given period of time, right? We did this in about 550 villages in Chhattisgarh. This was in the year 2021. So we saw 3 things happen here, right? One, the women are empowered now. Okay, they feel empowered because they are now becoming leaders in the community. They are becoming leaders in their own. Their family looks at them different, right? All of a sudden, use of mobile phone is a socially acceptable thing now, right? We know of women who are not allowed to use mobile phones, right? But now the mobile phone is being put to use for something like this. Then it's a socially acceptable thing to do now. They're becoming leaders in the community. Governance is improving. They know how to walk across to a government office, into a panchayat office, village office, and then get their job done. So that's one thing. Second thing is financial independence. So Dalberg did a study of Hagdarshak's model, and on an average in the last year, about 3,500 rupees per month is how much these women entrepreneurs per month they've earned, right? So financially, they are more independent. They are able to contribute to the family income. 3, digital independence, right? They are now able to use a phone. So all of a sudden, we are seeing that they are now more keen to pay using a digital money. They are using a voice video call, right? We sometimes train them using video calls, so they are all of a sudden willing to use video calls, and stuff like that. E-commerce, small transactions on e-commerce platforms. So this is a digital independence that we are able to achieve. So this is the kind of work that we do really. Yeah, Gayatri, thanks a lot for sharing some exciting stuff. I mean, this is very interesting. What all these Hagdarshikas have been doing and what you have been able to facilitate. So thank you very much. I'll come back to Rupa Srivastava ji. Rupa ji, आप grassroots पे वहीं पे रह के काम कर रहे हैं जैसे शुभ्रांशु जी कर रहे हैं खुद. तो आप थोड़ा सा बताइए अपने काम के बारे में. थोड़ा सा ब्रीफ रखेंगे तो 1-2 राउंड और हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा मुझे टाइम का भी दिक्कत लग रहा है. थैंक यू. सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार. मैं रूपा श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ रायपुर से. एट प्रेजेंट अभी मैं बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही हूँ. बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट के 5 ब्लॉक के लिए मैं काम कर रही हूँ अभी एट प्रेजेंट. और सर, एसएचजी को लेकर हमारा एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा. जब एनआरएलएम और एसजीएसवाई की योजना जब हमारे छत्तीसगढ़ में आई थी, तो उस समय एक अलग ही सा माहौल था. ये एसएचजी का एक मोड ही अपने आप में बहुत ही अच्छा रहा महिलाओं को आगे लेकर आने के लिए, जहाँ पे महिलाओं के अंदर में ये भी क्षमता नहीं थी कि वो महीने का 10 रुपया कैसे जमा करेंगी. उस जगह से लेकर आज महिलाएं 2.5 लाख 5 लाख तक का लोन बैंक से ले रही हैं और उसको रिटर्न भी कर रही हैं. तो मैं एसएचजी को एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में देखती हूँ अपने छत्तीसगढ़ के लिए और अपने देश के लिए भी. महिलाओं का इसमें सशक्तिकरण बहुत ही अच्छा हुआ एसएचजी को लेकर. एसएचजी के कारण महिलाएं एम्पावर हुई, उनके फैमिली मेंबर एम्पावर हुए, जहां पर उनके बच्चियों को कम उम्र में शादी, ये सारी बहुत सारी चीजें जो सोशल एक्सेस थी वो भी धीरे धीरे बहुत अच्छी तरह से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इम्प्रूव हुआ. एट प्रेजेंट हमारी संस्था ने सर डिसेबल्स के भी हमने एसएचजी बनाए. उनके राइट एंड एंटाइटलमेंट के लिए हमने उनके एसएचजी, क्योंकि गांव में सिर्फ देखा गया कि जब एसएचजी बन रहे थे तो डिसेबल्स को ध्यान नहीं दिया गया, डिसेबल्स को एसएचजी में जोड़ा भी नहीं गया. और एक गांव में 5 से 7, 8 या 10 ऐसे डिसेबल्स होते, कुछ महिला हैं तो कुछ पुरुष है, कुछ बच्चे हैं. तो जब हम डिसेबिलिटी पे हमने काम किया तो हमने देखा कि इनके लिए भी इनका भी एक एसएचजी होना चाहिए जहां पर इनको हर तरीके से एम्पावर कर सके. यहाँ पे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का यहाँ पर हमारा बहुत अच्छा उपयोगिता रहा.
जहां पर हम इनके हमने विलेज लेवल पे हमने इनके SHG बनाए, उनके हमने ग्रुप बनाए, सेक्टर लेवल पे बनाया, ब्लॉक लेवल पे बनाया और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया, और सबको हमने एक डिजिटल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से सबको हमने जोड़ा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुझे काम करने के लिए भी और उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा से कोई भी योजना आ रही है, आज जैसे सपोज आज कलेक्टर की मीटिंग होने वाली है, जनदर्शन लगने वाला है, तो हम फटाफट हम सारी उनकी चीजों को हम उनके ग्रुप में शेयर करते थे और सारी ओर एक मैसेज आ जाता था और एट ए टाइम लोग वहां पहुंच जाते थे, क्योंकि एक दिक्कत होती थी लोगों के पास मैसेज पहुंचने का। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है ना बहुत अच्छा काम इसलिए किया। इसमें भी सबके पास स्मार्टफोन नहीं है आज के डेट में, विशेषकर महिलाओं के पास नहीं है, और अभी भी फोन को एक सिर्फ बात करने का और इंटरटेनमेंट का जरिया माना जा रहा है। इसके अलावा इसके एक बहुत बड़ी कि हम इसको एक उनके योजनाओं से जोड़ने के लिए, उनको लाइवलीहुड से जोड़ने के लिए, एक प्लेटफॉर्म देने के लिए जो एक इस डिजिटल का जो उपयोग होना चाहिए वो अभी नहीं हो पा रहा है बहुत बेहतर तरीके से। फिर भी हमने हमारे माध्यम से हम लोगों ने इस कोविड के टाइम पे भी हमने जहाँ पे सारी दुनिया सोई थी, बैठी थी, छुप गए थे हम सब अपने अपने घर के अंदर, वहां पे SHG को हम लोगों ने गवर्नमेंट के माध्यम से मास्क बनाने का, उनको उनके डॉक्टर्स के ड्रेसेस रेडी करने का, सिंपल पॉलीथीन के जूते बनाने का, ये सारी काम हम लोगों ने एक इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से गवर्नमेंट ने भी उनको दिया, उनको ऑनलाइन पेमेंट करना, उनको काम देना, वर्क ऑर्डर देना, उनको पहले हर काम के लिए वो अपने ऑफिस से बुलाते थे, पर उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से उनको तुरंत लेटर जारी किया, तुरंत ऑर्डर जारी किया, तुरंत काम दिया। तो ये सब भले ही अचीवमेंट ये छोटा होगा, पर ये इसे भी मैं बहुत बड़ा मानती हूँ। रूपा जी, मैं यहाँ पे माफी चाहता हूँ कि थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा बिकॉज थोड़ा सा टाइम का कमी हो रही, तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग व्हाट यू डूइंग एट ग्रास रूट्स। अच्छा लगा सुन के। तो मैं क्विकली आई थिंक एक मिनट सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्विकली अगर हमें अपने साथी लोग रेस्पेक्टेड पैनलिस्ट ये बताए कि ये जो इतना हम टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं, अक्रॉस द बोर्ड कर रहे हैं, तो इसको हम कैसे यूज किया जाए ताकि स्केल अप हो जाए SHGs का, या रेप्लिकेशन हो जाए, या नॉलेज शेयरिंग हो जाए। तो ये बड़े साइलोज में बहुत बड़े काम हो रहे हैं और काम बहुत हुआ है, होना और भी ज्यादा है, तो आगे कैसे इसको लिया जाए। आई विल कम टू कृष्ण सर द फर्स्ट थिंग। पल्सना कृष्ण जी, क्विकली 1 मिनट में अगर आप बता दें कि आगे के लिए आप क्या रोड मैप सजेस्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग ऑलरेडी अन्य कई स्टेट्स में स्टेट लाइवलीहुड मिशन के साथ काम कर रहे हैं, जहां आज तक करीबन 2 मिलियन SHG मेंबर्स और स्मॉल होल्डर फार्मर्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विशेष करके हम खूब इंटरेस्टेड हैं। यहाँ ऑल SHG मेंबर्स का प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़ाने का तरीका टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग एक्सेलरेट कर सकते हैं, और द सेम टेक्नोलॉजी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं वो वैल्यू चेन में, ताकि अपना प्रोड्यूस का वो ज्यादा इनकम प्राइस रियलाइजेशन मिल सके। वो भी हम लोग करने के लिए वो ऑलरेडी सिस्टम्स अवेलेबल हैं, और हम खुद बहुत हैप्पी रहेंगे छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलके काम करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक दैट्स वेरी यूजफुल सर। थैंक यू वेरी मच। शुभ्रांशु जी, आप बताएंगे थोड़ा सा, आप बिल्कुल एकदम ग्रासरूट्स पे काम कर रहे हैं, तो ये एक डिस्कनेक्ट है क्या जो वहां पे एक्चुअल काम हो रहा है, जो हम लोग दिल्ली में बैठे या कहीं और बैठे हैं, तो इसको कैसे एक बार में लिंकेज और बढ़ाई जाए ताकि और पता चले क्या काम हो रहा है, क्या किया जा सकता है। हम NGOs एक छोटे लेवल पे काम कर सकते हैं, हम एक मॉडल बना सकते हैं, इसलिए हम सरकार से जुड़ के काम करते हैं कि ये सरकार का काम है कि उसको बड़े लेवल पर और सारे जगहों पे फैलाए। तो हम एक मॉडल बना सकते हैं, और सरकार का ये काम है कि उसको वाइड सारे इलाके तक लेकर जाए। तो इसलिए NGO और सरकार को साथ काम करने की जरूरत है। जी जी, थैंक यू वेरी मच शुभ्रांशु, दैट्स वेरी यूजफुल। आई थिंक दिस वेरी इंटरेस्टिंग फॉर गायत्री जी, बिकॉज वो एक बिजनेस मॉडल परस्यू कर रहे हैं। तो वह सरकार को, तो हम सरकार का काम तो नहीं कर सकते, बट सरकार को अपना काम करना चाहिए। और एज ए बिजनेस मॉडल कितना आपको लग रहा है कि इसको आगे बढ़ाने का स्कोप है? क्विकली मैम, इन 1 मिनट प्लीज।
Sure. No, we think the scope is huge. CG, after Chhattisgarh, we have replicated this in Madhya Pradesh. Now, Jammu and Kashmir is another place where we are replicating this specifically with SHGs. Our focus would be to increase that earning capacity of that Hakdarshika from 3,500 to 5,000 to 10,000. That need not come just from government schemes. We believe it can come from financial inclusion products also. So our dream is to start training these women on these additional products apart from schemes, so we increase their earning potential and this becomes a sustainable model for them, sustainable livelihood model for them. थैंक यू वेरी मच गायत्री जी। रूपा जी, आप बताएंगे कि फाइनली आपको जब वहां पे आप काम करते हैं और आप इतनी सारी बातें सुनते हैं, तो आपको लग रहा है कि कुछ ज्यादा नॉलेज एक्सचेंज की जरूरत है या क्या करना चाहिए आगे के लिए जो रोड मैप बने? सर बहुत ही जरूरत है। मैं गायत्री मैडम की हर शब्द से सहमत हूँ। बहुत ही जरूरत है हमें महिलाओं को ट्रेनिंग, एक ऐसा टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको ट्रेनिंग देने का। आज भी जो ट्रेनिंग के बहुत सारे मॉडल बने हुए वो हमारे ग्रामीण महिलाओं के स्तर का नहीं है। उनके स्तर का ट्रेनिंग मॉडल होना चाहिए और टेक्नोलॉजी के साथ होना चाहिए और ऐसी ट्रेनिंग करें जो जिसके लिए वो जानकार है, जिसमें उनका इंटरेस्ट है। और दूसरी चीज है कि उसकी मार्केटिंग, इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा सहयोग चाहिए। अगर इस मोड पे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। Thank you, Rupa ji. End of this webinar on SHGs and the use of digital technology in Chhattisgarh. It was enlightening to know of the exciting work being done by SHGs in using digital technology at the grassroots level. Technologies like mobile phones, WhatsApp, IVR, and videos have been changing lives of people and impacting them positively. I once again thank our esteemed panelists, Palasana Krishnan of Digital Green, Shubhranshu Chaudhary of CGNet Swara, Gayatri Shanamugam of Hak Darshak Empowerment Solutions, and Rupa Srivastava of Grahini Voluntary Organization. Thank you very much.